Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with NJ. Friends, आज है 18th January and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones, along with a trading plan for Nifty and Bank Nifty for the next trading day, जो कि पड़ेगा 19th January को Tuesday, right? Well, before we start the analysis, my invitation to you is to subscribe to our YouTube channel if you haven't done it yet. And also don't forget to press the bell icon so that whenever we upload any new video, you get intimation. And apart from that, yes, be generous to share the videos with your friends and trading communities so that they can also have access to the quality knowledge. Now, if we go to the daily chart of Nifty and Bank Nifty, friends, we can see that for last 2 days, it was making lower highs and there had been bearish divergences, which I've been talking about most of the time, and the market had been in overbought zone in weekly, daily, as well as monthly charts, right? So I've been saying that the correction and consolidation during such a kind of environment is inevitable, and that's what has really happened today. Nifty as well as Bank Nifty opened with a slight gap up and remained in the grip of bears. Post lunch, bulls tried to recover a little, but they couldn't sustain at higher levels, somewhere around, I think, 14,450 के आसपास में वापस से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, right? Mainly, in fact, if you talk about all the sectors were more or less in red, but the downside rally was led by metals, PSUs, pharma, banking sector, media, auto, reality, right? So they fell almost more than 2%, but बाकी भी 1-1.5% गिरे हैं. So top contributors today were UPL, Reliance, Titan, HDFC Bank. HDFC Bank का आज result था, that was great. Aisha Motor, and the big losers were Tata Motors, Tata Steel, ONGC, Hindalco, and JSW Steel. Nifty, although opened with a gain of 20 points in the morning, but closed with a net loss of 152 points, and it closed at 14,281. And Bank Nifty को अगर हम देखें तो Bank Nifty opened with a gain of 28 points in the morning, but closed with a 435 points के loss के साथ में at 31,812 में Bank Nifty close हुई. Overall, market की breadth थी negative रही. Only 6 stocks advanced, while as 44 stocks declined out of Nifty 50 stacks. Not only Nifty 50, today we saw almost all the indices, be it Nifty small cap or Nifty mid cap or Nifty large cap, they all were down more than 1%. Nifty mid cap was 1.02% down. Small cap was 1.77% down, while his large cap was down by 1.16%. अगर हमने जो कल आज के लिए रेंज दी थी उसको देखें, हमने फ्राइडे को जो रेंज दी थी आज के लिए वो थी 14,250 to 14,600 की, with a neutral bias, and Bank Nifty के लिए 31,800 से 32,700, more or less market within range रही. Of course, Nifty थोड़ा downside में range को break करके गई, but it pulled up again, right? Trend perspective से देखें friends, so Nifty as well as Bank Nifty both are making lower lows and lower highs, so downtrend has already been confirmed. In fact, on Friday's move itself, right? So अगर हम candlestick के perspective से बात करें तो Nifty as well as Bank Nifty last 2 days have been making bearish patterns on a weekly, although Nifty made bearish, but in fact on weekly as well both indices made bearish patterns. Price action perspective से देखें, कल अगर again negative bias रहता है, you would see Nifty getting a support at 14,226, 14,174, 14,123, and 14,073. Now, 14,073, friends, is also a 38% Fibonacci retracement from the level of 13,150, right? So 38,000 तक अगर
market यहाँ से reversal करती, you can still say that overall the structure bullish है, but then this could still be a very healthy correction, right? Similarly, अगर हम back nifty को देखें friends, तो अगर निफ्टी अपसाइड में मूव लाती है, थोड़ी बुलिशनेस आएगी अगर निफ्टी में, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो है 14,359। ऑफ कोर्स 14,300 पे भी 23% का जो फिबोनाची लेवल है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 14,359 टूटता है तो देन 14,400 एंड 14,455 जो कि आज का डे का हाई है, दोज विल बी द अपसाइड रेजिस्टेंसेस फॉर निफ्टी। अगर 455 टूटता है तो यस 14,500 वुड बी अ साइकोलॉजिकल लेवल। एंड सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है 31,658 पे, 31,548 पे, 31,400 पे एंड 31,290 पे। 31,290 अगेन इज अ 38% फिबोनाची लेवल एंड वी एक्सपेक्ट दिस लेवल टू होल्ड गुड फॉर at least tomorrow, right? एंड फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या एनवायरनमेंट बनता है। अगर बैंक निफ्टी में कल बाउंस बैक होता है फ्रेंड्स 32,830 जो कि टैड अबव देन आज की क्लोजिंग के है, दैट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। बट मेजर रेजिस्टेंसेस जो आएंगे 32,000 का आएगा, 32,170 का आएगा, 32,290 का, एंड जो आज का हाई है 32,439 का, ये मेजर रेजिस्टेंसेस है बैंक निफ्टी के लिए, राइट? यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज लेवल्स सो दैट ऑन ब्रेकिंग ऑफ दीज लेवल्स you can conclude whether you want to remain bullish or bearish in the market, right? Of course, at the end of the session, we also look at data and other international markets so that we can conclude about how we can trade back nifty on a smaller time frame or nifty on a smaller time frame, right? So अभी डेटा पर्सपेक्टिव देखने के लिए हम ऑप्शन चेन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन चेन हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स 21 जनवरी को एक्सपायर होने वाली, और आज क्योंकि मार्केट क्लोज हुई है 14,281 पे, तो 14,300 को हम एट द मनी कंसीडर करके वहां पे ऑप्शन चेन में देखेंगे कि किस टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं। मींस बुल्स एंड बेयर्स ने अपनी अपनी पोजीशंस बनाई हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर अजम्पशन अबाउट द मार्केट, राइट? सो 14,300 को अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो आज यहाँ पे although it is in the money, this strike of 14,300 as of now is in the money, but अगर market इसके ऊपर जाती है 40,000, this will work as a good support level, and यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आज यहाँ पे देखने को हमको मिली है। however the real support level at this point of time जो हमको विजिबल है वो है फ्रेंड्स 14,200 का, राइट? और यहाँ पे ऑल्दो पुट राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है, बट 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि सफिशिएंट इनफ है टू ट्रीट इट एज अ सपोर्ट लेवल। सेकंड सपोर्ट लेवल दिख रहा है हमको फ्रेंड्स 14,100 पे, जहाँ पे कि थोड़ा पुट राइटिंग हुई है, बट ओवरऑल 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, सो दैट्स गोइंग टू वर्क एज अ सपोर्ट टू। एंड अगर ये लेवल टूटता है फ्रेंड्स तो 14,000 का जो लेवल है, जहाँ पे आज almost 500,000 contracts fresh आए हैं and overall 2.2 million contracts हैं, so this will act as a support level on downside. So 14,000 का level we can consider for tomorrow as a crucial level, and 14,000 का level also is a you can say that psychological level, right? Now अगर हम कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स, तो आज कोई कॉल अनवाइंडिंग नहीं दिखाई दी है, बल्कि इवन इन द मनी में आज कॉल राइटिंग हुई है। So bears are quite gung-ho about pulling down the index, and हमारा जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है फ्रेंड्स वो आ रहा है 14,300 पे, सेकेंड आ रहा है 14,350 पे, एंड थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो हमको दिखाई दे रहा है वो दिखाई देता है 14,400 पे। अगर 14,400 टूटता है तो हमारा मैक्सिमम ओआई वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 14,500 का, एंड जिसपे कि ऑलमोस्ट 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाए, बट ओवरऑल 3.6 million contracts right हुए हैं। Of course there are more higher strike levels also जहाँ पे कि ज्यादा हुआ है, but 14,500 we can consider as a higher level for tomorrow. So अगर मैं ये ऑप्शन चेन के हिसाब से बात करूं फ्रेंड्स, तो 14,000 से लेके 14,500 की रेंज कल के लिए दिखाई दे रही है। नाउ दिस इज अ वेरी वाइड रेंज, राइट? जनरली 300 350 की रेंज रहती है, but you also need to understand that we have a union budget coming up on 1st February, so एक uncertainty definitely आपको
दिखाई देगी मार्केट में, एंड द प्रीमियम्स विल बी राइजिंग, वोलेटिलिटी विल बी राइजिंग ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, वो यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज दिखाई दे रही है हमको कि जो रेंज है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो रही है एज ऑफ नाउ निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस की। इसका पीसीआर है फ्रेंड्स 0.58, राइट। निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों का आज का पीसीआर है हमारा 0.58, which talks about the bearish mood in the market, which is also visible from the shifting range of Nifty as well as Bank Nifty. So Bank Nifty के लिए जो हमारी रेंज निकल के आ रही है 31,500 से 32,500 की निकल के आ रही है, थोड़ा वहां पे भी हमको ब्रॉडर रेंज देखने को नजर आ रही है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं ऑप्शनल provisional data की, तो आज FI were the net buyers with a 651 crore, while as DIs were net seller with a small amount of 43 crore. So I was expecting actually DI ज्यादा sell out में होंगे, but आज ऐसा हुआ नहीं है, right? अगर मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडेक्स की बात करूं तो FIs are sideways, pros are bearish and retailers are as usual mildly bullish. But जो फ्यूचर है इंडेक्स का, उसमें FIs are still extremely bullish. प्रोज एंड जो रिटेलर है वो थोड़ा न्यूट्रल हो गए हैं, और DIs एज ऑफ नाउ आर नेट शॉर्ट। तो यूरोपियन मार्केट एंड यूएस के मार्केट की बात करें, दे आर इन अ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन फेज, व्हिच वाज very natural because the kind of up move European as well as US market has shown, उसमें डेफिनेटली एक करेक्शन तो वहां पर भी बनता है, क्योंकि मार्केट्स वर इन ओवरबॉट जोन। तो जब भी मार्केट ओवरबॉट जोन में होंगे तो इंडिकेटर को कूल ऑफ होने के लिए थोड़ा नीचे तो आना ही पड़ता है, राइट। सो एज आई बीन सेइंग इन लास्ट मेनी ऑफ द वीडियोस दैट मार्केट इज स्टिल इन द sell on rise and buy on the dips. तो as of now buy on the dips as of now हम नहीं कहेंगे, क्योंकि buy on the dips it might go when the market hits at 38% Fibonacci level, right? Let's say for Nifty it is 14,073 या 14,000 का लेवल आप पकड़ के रख सकते हैं। Okay, now if I look at the RSI friends, RSI is 71 as of now for Nifty, and India VIX आज वापस थोड़ा बड़ा है, 24.4 पे है, and that is again a clear sign of upcoming union budget, right? Market in daily में तो like overbought zone से बाहर आ गया, but weekly में अभी भी weekly as well as monthly में overbought zone में है, so you can expect some more correction before the union budget, right? As the market is still in overbought zone in higher time frames. As long as 14,000 के ऊपर है, I would still say the structure is bullish. There is no need to be fearful about it. Of course, जब तक निफ्टी 14,000 के ऊपर है, बैंक निफ्टी 31,000 to 31,300 के ऊपर है, we would still say that it might bounce back. And well, generally 2-3 दिन के downfall के बाद में just kind of downfall at a time, you will see a dead cat bounce back anyway, right? So ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रेंज जो है काफी वाइड नजर आ रही दोनों के लिए। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कुड बी अवेलेबल टू यू फॉर tomorrow, right? That would be of interest to you. Let's look at first Nifty time frames, and अगर हम इसमें मार्केट वोलेटाइल हो out की, right? But if Nifty tomorrow opens gap up at 14,350 or 14,400 या 14,455 के आसपास में, तो you can think of shorting that on ORC breaking downside, right? And अगर Nifty let us say 14,000 के लेवल पे या 14,100 के लेवल पे open up होता है, friends, you would see a huge buying interest in this area, and you would see the bounce back towards 14,500. That's how you can trade Nifty. Of course, ORC का breakout देखना ना भूलें, and breakout होने के बाद में at least 20 minutes to 30 minutes का definitely उसमें आप sustainability देखें. That means the price has to sustain above or below the ORC, right? So ORC, sometimes you might be wondering what is ORC. It's an open range candle जो पहले 10 मिनट की फर्स्ट कैंडल आती है, उस कैंडल की बात कर रहे हैं। उसके ब्रेकआउट की टेक्निक्स में
काफी वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप भी देख सकते हैं उनको, राइट। नाउ लेट्स लुक एट हाउ यू कैन ट्रेड बैंक निफ्टी हियर, राइट। सो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारी नो ट्रेडिंग की जोन निकल के आ रही 31,660 से 31,830 की रेंज है फ्रेंड, एंड इसमें एटलीस्ट हाफ एन आवर सस्टेन करने दें मार्केट को इन ओआरसी ब्रेकआउट। एंड अगर बैंक निफ्टी कल 32,200 या 32,300 या 32,450 के आसपास में ओपन होती है, अगेन यू विल सी द सेलिंग इंटरेस्ट। इनफैक्ट 32,200 के आसपास से आपको सेलिंग इंटरेस्ट दिखेगा मार्केट में। अगर बैंक निफ्टी सपोज करे 31,200 या let's see 31,400, 30 even 31,500 के रेंज में ओपन होगी, तो आपको एक बाउंस बैक दिखाई देगा विच विल लीड यू टुवर्ड 31,800 और 900 या 32,000 तक भी पुल बैक आ सकती है। सो ऐसे में आप ओआरसी रेंज का ब्रेकआउट देखें एंड राइजिंग वॉल्यूम के साथ में आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी योर टारगेट व्हेन यू आर टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड? ऑल these resistance levels and in fact any level which is as of now a support level, but if it is above the price level, will act as a resistance. Similarly, if you are short, so those all levels which are below the price levels, though they may be right now a resistance level, would act as a targets, right? So छोटे छोटे targets में आप profit book करते रहे friends. Don't expect जब भी consolidation and correction की time रहती है, तो उस पे don't expect the market to be making huge moves in one direction, right? So market would be volatile for coming few weeks. In fact, at least 1.5-2 हफ्ते के लिए, जब तक कि यूनियन बजट क्लियरली नहीं आ जाता है, right? So trading range for tomorrow, what we see in Nifty is 14,100 to 14,500. For Bank Nifty, 31,300 to 32,500. Both are with a mild, in fact, not mild, I should say, they are with a bearish bias, right? However, you may also expect a bounce back if the markets hit this 38% Fibonacci level, which is shown in a violet color, right? So be careful as a trader, intraday trader, अपनी position को hedge करके trade करें, stop loss जरूर use करें. International markets are also right now in consolidation and correction mode. Keep on looking at India VIX and USD INR के chart को, और आपके जो option chain ka chart rehta, right? That gives you a current status of bulls and bears, what way they are making their position and what way they are strategizing in the market, right? So that will help you to navigate through the market as an intraday trader, right? Keep on booking the profit if you are having profits, let's say 5 lot hai, तो उसमें 2 lot में profit book कर लिया, 3 lot को trailing stop loss लगा के आप आगे बढ़ा सकते हैं, right? I hope with this video and analysis, you are enhancing your trading skills and analysis skills to make yourself as a profitable trader. Thank you very much for watching the video, friends. To get latest information, do subscribe to our YouTube channel and don't forget to press this bell icon so that whenever we upload any new video, you get notification. And thank you very much for subscribing. If you have already subscribed, do share these videos with your friends and trading communities so that they also get the benefit of quality knowledge. Thank you once again for watching and liking the video, friends. Good luck, happy trading, happy investing.